हाय एवरीबॉडी, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सीपीआर. We are also going to understand how CPR acts as a crucial support and resistance. We are going to talk about two positional stocks which you can add in your portfolio and intraday stocks for tomorrow. So today's video could be a little longer. So without wasting much time, let us get started with our understanding of the market. So guys, this is the chart of Bank Nifty on a 5 minutes time frame. If you see, in most cases, what happens when you are trading the markets? See, this was a good bearish candle. Then the market formed a range and then it broke out. Now, before we talk about what happened later on, focus on this candle. What do you think can be a reason for such a big candle? इतनी बड़ी candle का reason क्या हो सकता है? अगर आप इसकी range देखो, it's a very big range, right? 247 points range in Bank Nifty in just 5 minutes. What could be a reason for that? Think of it as those people who got trapped when the market broke the day low and they entered over here. Right? What does trapping mean? जब भी कोई trap होता है, these are sellers, right? Who would have sold when the market broke its day low and along with a good consolidation, right? It formed a good structure, and not just that, it also closed near yesterday's closing, which was also a very good support swing for the market. So it was a good place for sellers to initiate a position. However, as soon as the market comes above, these levels from where they entered, they start to panic. And this panic leads to a lot of buy orders because they start booking their position. And that is why you see such big momentum happening. Now, remember one thing, that these traps, okay, they usually create strong momentums either on the downside or upside. So we have already spoken about these traps before as well, but this will really help you in understanding the traps much. Look at this big candle. It's a reason for the traps. Now the point is, how can we avoid such breakdowns? हम इन breakdowns को कैसे avoid करें? So it's very simple. What we use is a CPR over here. If you see today, when the market broke its day low, so what happened when the market broke its day low? It actually took support at the CPR and started to reverse. Now you may be wondering, what's the use of it after the market hours? Well, trust me, this position was shared on Telegram with all the learners while the market was trading over here, because I was so sure that a lot of people are looking to short the market, but they're ignoring the CPR, which is the strongest support and resistance on the chart. Let's go to the Telegram first. And if you're still not a part of Telegram channel, make sure you join us and be a part of the Telegram community. So guys, have a look at this conversation. If you see at 9:43, I posted a picture in the group saying, don't take breakdown trades. Niche CPR has to focus only on scalping. So even if you're shorting, you get out over here. Don't stay in the trade for longer. Are you getting me? Because this CPR is likely to act as a strong support. Now, here it is. You see that big reaction, those big green candles. It happens when there is a fake breakout or a fake breakdown. Now, to be a part of this live commentary, join us on Telegram. The link for the same has been shared in the bio as well as in the description box. Those of you who are not following us on Instagram, all the links are shared in the description section. So with that note, we'll again move forward to the charts. And guys, this is the chart of Nifty on a 5 minutes time frame. If you see Nifty as well, it it was continuing its downside momentum and it took support exactly at the CPR, and look at the strong momentum. Now, view for tomorrow in Nifty is pretty much simple, that we are going to look for a shorting opportunity below this level. What I see is that over the last 2 days, the move has been quite stretched, right? Can you see over here? Good momentum on the upside. So probably tomorrow, the expiry is done now. So we are going to see some opportunity on the short side as well. So below this level, we may see some shorting opportunity in Nifty. So this is the view for Nifty for tomorrow. Now let's move forward and talk about some positional stocks. ये positional stocks जो है ना, ये आपको बहुत अच्छी momentum दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा ऐसा स्टॉक जिसमें मैंने एंटर किया है कुछ समय पहले, एंड शायद आप इन स्टॉक्स में जो भी नए ब्रेकआउट दे रहे हैं उसमें एंटर कर सकते हो, लेकिन
साइकोलॉजी आप तभी समझ पाओगे जब मैं आपको इन स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूं। तो सबसे पहले आप इस चार्ट को चेक करिए, हिंडाल्को। हम जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम में, इसको मैं जूम आउट करता हूं, आपको ऑलरेडी कुछ लेवल्स बने हुए दिखेंगे यहाँ पे। सो व्हेन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ओके, इट गेव अ ब्रेकआउट आउटसाइड दिस रेंज, you see this was a big range, we entered over here which was at around 340, which it was also updated to our premium members as well, हमारी जो पेड कम्युनिटी है वहां पे बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, अब ऐसा ही एक स्टॉक, नॉट जस्ट एक स्टॉक, मैं आपको ऐसे दो स्टॉक बताऊंगा जहां पे आप एंटर करके एक पैसिव इनकम बना सकते हो। इन स्टॉक्स में आपको एंटर करने के बाद ज्यादा कुछ करना नहीं है, जैसे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में वो रेगुलर अपडेट्स की बातें करते हैं, बहुत सारी और चीजें होती है वहां पे, तो आपको यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज ये पोजिशनल ट्रेडिंग है। तो यहाँ पे आपके रिटर्न्स भी बड़े होंगे और आपकी मेहनत काफी कम होगी। तो हम देख लेते हैं पहले उन स्टॉक्स को। पहला स्टॉक है VEDL, विच इज योर वेदांता। लुक एट दिस, ये स्टॉक जो है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत सिमिलर है जो जब हम मारुति वाले स्टॉक की बात कर रहे थे। सो लुक एट दिस, दिस वाज अ रेजिस्टेंस टेस्टेड once, twice, thrice, and before the breakout it has shown good amount of consolidation. Now if this stock gives, like, sustains above this particular high of the candle, we can expect very strong momentum in Vedanta. We are already in Hindalco, so the entire metal sector, okay, it is looking quite strong. So this is Vedanta for you guys. Another stock which is looking strong is also very interesting from the same sector, right? This is, so guys, दूसरा stock जो हमें अच्छा लग रहा है for positional trading is National Aluminium. Just have a look at this stock. It's breaking its bigger range, मतलब 2008 को जो एक बड़ी रेंज बनी थी उसी रेंज के अंदर ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट दे रहा है। Now have a look at the volume that are building up, right? It's a huge build up in the volume. So the volumes are building up like anything, and from here you can expect a very strong momentum in National Aluminium. So यहाँ पे एक बहुत ही strong momentum आ सकती है। I hope it is clear. सबसे पहले हमने देखा हिंडाल्को का चार्ट, जहां पे आपने देखा कि ब्रेकआउट होने के बाद कितनी बड़ी मोमेंटम आई है, लेकिन साइकोलॉजी समझिए, हमने उसको जनवरी लास्ट ईयर में एंटर किया था और आज भी हम उसे होल्ड कर रहे हैं। तो जब भी हम एक पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपका पेशेंस लेवल और बढ़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कुछ इंट्राडे स्टॉक्स की। ठीक है, इंट्राडे स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो आज हम सिर्फ दो ही स्टॉक्स की बात करेंगे क्योंकि हमारा डिस्कशन ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। तो हम इन दो स्टॉक्स को देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है सन फार्मा, जिसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे छोटी टाइम फ्रेम। अगर आप देखेंगे, यह है सन फार्मा का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। सबसे पहले आप देखिए बड़ी वॉल्यूम्स, बिग वॉल्यूम्स ऑन द चार्ट। देन लुक एट द कंसोलिडेशन ऑफ द लास्ट 3 days, 1 2 3 days, right? Look at the bars, they are within one range, right? Now if you go to 15 minutes time frame, आपको और इसमें इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर दिखेगा कि इसकी जो क्लोजिंग है वो भी अपने डे हाई के आजू बाजू में हुई है। तो अब हम थोड़ा जूम इन करते हैं, हमारे लेवल्स मार्क करते हैं इसमें। तो हम इसको एंटर कर सकते हैं 866 के ऊपर और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 890 के नीचे, सॉरी 896 के ऊपर वी हैव टू गो लॉन्ग एंड 890 के नीचे हमारा रहेगा स्टॉप लॉस इन सन फार्मा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी की मैं आपको दो स्टॉक्स बता रहा हूँ। क्यों दो स्टॉक्स? बिकॉज उनका स्ट्रक्चर बहुत सेम है। सबसे पहला है टेक महिंद्रा। आप देखिए, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको समझोगे कि ये जो स्टॉक है ना, अब ये डब्ल्यू बना रहा है। हम इसमें प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक इस तरह डब्ल्यू बना के ऊपर जाने वाला है। हम ऐसा क्यों प्रीएम्प्ट कर रहे हैं? क्योंकि बोथ निफ्टी आईटी और जो उसके पीयर स्टॉक्स है वो काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो विपरीत है हमारी पहले की थिंकिंग से, जहां पे उसने बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिया था। ठीक है, सो यहाँ पे हमें एक अच्छी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हम एक और स्टॉक देख लेते हैं जिसका नाम है HCL टेक्नोलॉजी, राइट? तो यू विल गेट फेयर आइडिया ओवर हियर एज वेल। अगेन यू हैव अ लुक एट दिस स्टॉक। इट ड्रॉप्ड शार्पली, it reversed, formed an insider bar, and now it's continuing its strong momentum on the upside. Now let's have a look at Nifty IT. Now look at the similarity between Nifty IT and TechM. In both the cases we are assuming कि यहाँ पे एक W formation बनेगा, and if you look at the last 2 days closing of Nifty IT, it is quite interesting. For both the days it is closing near its day high. ठीक है, दोनों बार it is closing near its day high, which is a very good sign. Now if you see,
आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस। सो इससे आपको काफी आइडिया मिल गया होगा। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। पहली बात, आप जाके ये चीज देखिए कि हमने कुछ स्टॉक्स की बात की थी, जैसे कि रिलायंस और इंडस्इंड। हमने इनकी बात कब की थी? वेनेसडे को, और सॉरी ट्यूसडे को। और आप देखिए कल उन्होंने कैसा मोमेंटम दिया, रिलायंस आज कैसा मोमेंटम दे रहा है, वो किस तरह ट्रेड कर रहा है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट जिसपे हम बहुत डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसी के साथ आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप टू सी यू टुमारो अगेन। सो विद दैट नोट, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो थोड़ा लंबा था। मुझे आपको पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बताना था, कल के स्टॉक्स क्या है वो बताना था, बैंक निफ्टी में क्या है वो बताना था। तो जितनी ज्यादा चीजें उतना ज्यादा वक्त लगता है। इसी के साथ आप सभी को वापस मेरा जय जिनेंद्र। आई विल बी सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच गाइस।